Cameras on, please. Good morning, everyone. Okay, last time we have already discussed question number 2, trial balance. Adjustments not yet discussed. So go for the adjustments. Final accounts question 2, trial balance was already discussed. Adjustment 1. Stock on 31st March 07. Cost price is 1 lakh. Market value is 1 lakh. 1,20,000. Now पहली बात तो stock on 31st March 07. 31st March 07 is our year end. तो ये closing stock हुआ कि नहीं? End of the year का stock. Cost is 1 lakh. Market value is 1,20,000. We will value at what? Cost or market price, whichever is more या whichever is less. Whichever is less. And cost, इस बार cost is less, so underline 1 lakh. ये हमारे काम का है. एंड क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट क्या होते हैं? बैलेंस शीट एसेट साइड, ट्रेडिंग क्रेडिट साइड. ठीक है. सो बाय एनटीसी. देन डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग 20%, 10% रिस्पेक्टिवली. डेप्रिशिएशन के दो इफेक्ट बताइए प्लीज. डेप्रिशिएशन का 2 इफेक्ट तो एवरीवन नोज हियर. एसेट में ऐड होगा या लेस? चलो बोलो भंडारी. एसेट में ऐड या लेस? डेप्रिशिएशन लेस फ्रॉम एसेट. एंड डेप्रिशिएशन the indirect expense, so PD, profit loss debit. Now which two assets? Depreciation कौन सा दो एसेट करना है? प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग. सो प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग दोनों पे मार्किंग. भाई मार्किंग करो. शीट लेके बैठे हो कि नहीं? इंश्योरेंस इज पेड फॉर 1 year. ए 1 year मतलब 12 months. बट वो 12 months इज एंडिंग ऑन विच डेट? 30th June 2007. बट हमारा ईयर एंडिंग इज 31st March 07. एंड हमने इंश्योरेंस पे किया अप टू 30th June 2007. मतलब साल खत्म हो गया मार्च में, लेकिन हमने तो जून तक पे कर दिया है. तो पे करना बाकी है कि इट इज आउट एडवांस पेड, प्रीपेड? इट इज आउटस्टैंडिंग और इट इज प्रीपेड. एंड इट इज प्रीपेड फॉर हाउ मेनी मंथ्स? हमारा ईयर खत्म हो रहा है. इधर देखो ना ट्रायल बैलेंस की ऊपर डेट 31st March 07 को, और हम इंश्योरेंस जून 2007 तक पे कर दिया. तो कितने महीने का एडवांस पे हो गया? थर्टी फर्स्ट मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून. जून एंड तक पे किया. तो कितना महीने का एडवांस हुआ? 3 months का एडवांस हुआ, है ना? Look, clearly given insurance is paid for 1 year. 1 year means 12 months. But वो 12 months में से 3 months एडवांस है. Now this insurance जो हमने पे किया ना 6,000, can you see here? मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. This 6,000 that you have paid for how many months? 12 months. Year लिखा है ऐसा. It is paid for 1 year. तो वो 12 months का है. 12 months का 6,000. तो 3 months का कितना?
इतना 1500 एडवांस है। एक मिनट, एडवांस है मतलब इस साल का है कि नेक्स्ट ईयर का अभी से भर दिया? एडवांस है मतलब इज दिस ऑफ द करंट ईयर कि इट इज ऑफ द नेक्स्ट ईयर दैट यू हैव पेड इन एडवांस? यस, इट इज ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो पहली बात तो ये 1500 इस साल का नहीं है, तो लेस फ्रॉम इंश्योरेंस। एंड अगर हमने एडवांस पे किया तो इट इज अवर एसेट और लायबिलिटी? asset. So less from insurance and asset. So it is less from insurance. So mark insurance. Done. Then goods withdrawn by Ganga for personal use 10,000 during the year were not recorded in the books. Goods withdrawn for personal use. बताइए, goods are withdrawn for personal use. पहली बात तो this is drawings, और drawings कैपिटल में किस साइड जाता है? डेबिट साइड। Yes, drawings capital K. What's happening? Here, ये drawings है. Drawings तो partners capital debit. This is one effect. And goods withdrawn है. Goods का account कौन सा account? Goods का account. Goods का always effects are shown in which account? Trading account. And goods are going out of the business, so trading credit. Partners capital debit and trading credit. Then provide 10,000 as bad tax and reserve for doubtful debts 5% on debtors. पहले बेड डेब्ट्स की बात करते हैं. 10,000 बेड डेब्ट्स हुआ तो ऐड टू बेड डेब्ट्स, और उतना डेटर हमको कम देगा तो लेस फ्रॉम डेटर्स. व्हाट अबाउट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स? किस चीज का डाउट है, क्या होने वाला है? अगेन डाउट हो रहा है कि बेड डेब्ट्स होने वाला है, मतलब बेड डेब्ट्स अगेन बढ़ने वाला है, तो ऐड टू बेड डेब्ट्स, और उतना डेटर हमको कम देने वाला है तो लेस फ्रॉम डेटर्स. तो दो बार ऐड टू बेड डेब्ट्स लेस फ्रॉम डेटर्स. ये 10,000 के लिए भी और ये 5% के लिए भी. Add to bad debts less from debtors. बहुत लोगों का कैमरा ऑन नहीं है, सो मैं उनको रिमूव कर रहा हूं. And some are not clear, huh, Yesha? Okay, marking is done. Now 2 times add to bad debts and 2 times less from debtors. So mark bad debts and mark debtors 2 times. Here is my debtors.
इसको 2 बार मार्क करेगा. And do we have bad debts? Do we have bad debts? No. No. Prepare trading account, profit loss account for year ended 31st March 07 and a balance sheet as on that day after making the above adjustments. हमने 2 वर्किंग नोट ऑलरेडी बना के रखी है. So start drawing lines. Start drawing lines quickly. Cameras were supposed to be on for everyone.
And then copy the two working notes. Copy the working notes. Okay, ready. Now move on to the trial balance, please. सबसे पहले you have opening stock. We have already done the markings. जिनके पास मार्किंग नहीं है वो साथ साथ में मार्किंग भी करते जाओ और मेरे साथ लिखते भी जाओ. ट्रेडिंग डेबिट, चलो गो टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. ओपनिंग स्टॉक 80,000. एवरीबडी स्टार्ट. Then purchase and sales, you have both. डेबिट साइड इज परचेज, क्रेडिट साइड इज सेल्स, और सेल्स में एक मार्किंग है. अंडरस्टूड. तो ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग क्रेडिट. सेल्स इनर कॉलम. डन.
Then you have sales returns. Returns inward means sales return. So less from sales 30,000. Then carriage trading debit, power and fuel also trading debit, wages also trading debit. Then trade expenses, always profit and loss account. Don't go by the name trade expense to trading. Nahi. Trade expense always profit and loss account. 8,000. याद रहे trade expense always profit and loss account. Then debtors and creditors, 80,000, 60,000. Now debtors has two markings. You will have to leave 3 lines. और liability side पे capital के लिए 3 लाइन छोड़ देना. And then you have creditors, 60,000. Debtors inner column. Then salaries, insurance, postage, all profit and loss debit. Postage has a marking, so inner column and a line to be left. And commission, if you see in the trial balance, you have commission on both the sides of trial balance. Debit पर भी amount है, credit पर भी amount है. Credit वाला है वो commission received होगा, है ना, because income show credit balance. Here commission.
Then plant and machinery, inner column 2 lakhs, leave a line, furniture, outer column. Then advertisement 15, profit and loss debit. Building balance sheet asset side, inner column, and a line to be left. उसके बाद ड्राइंग्स है ऑफ द पार्टनर्स. Then capital, opening balance of capital account 2,50,000 each. I can't see your face, Bhumit. Yeah, fine. And after that, what do we have? After that, we have 12% bank loan. 1,50,000. Now stop. Everybody stop. 1,50,000 का बैंक लोन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है 12%. लिखा है ना, स्टार्टिंग में लिखा है 12% बैंक लोन. And the loan was taken on 1st October 06. Now from 1st October, everybody is listening carefully. From 1st October 06, the loan was taken, right? From 1st October till 31st March 07, 6 महीना हो गया. तो 1,50,000 पे 12% के हिसाब से 6 months का इंटरेस्ट ड्यू होता है 9,000. पूरे ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट पेड दिख ही नहीं रहा मेरे को. इसका मतलब उस 9,000 में से हमने एक भी पैसा अभी तक पे नहीं किया है. ओके, इंटरेस्ट जो है बैंक लोन का 9,000, उसमें से कुछ भी अभी पे नहीं किया है. Now first of all, interest on bond bank loan is my expense, so profit and loss debit. And I have not paid, I have to pay. I have to pay, it's my liability. Liability side पे बैंक लोन में वो liability भी ऐड कर देंगे. Is that okay? So profit and loss debit side and बैंक लोन में ऐड हो गया. Write down profit and loss debit side. Done. And balance sheet liability side.
This is also done. Then what? After that, we have cash in hand 7,500 as said. अच्छा, ये 9,000 जो था ना इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जिसकी अभी बात किया, उसका वर्किंग नोट वी हैव ऑलरेडी मेड लास्ट टाइम एंड आज आपने कॉपी भी कर दिया है उसको. Here. So trial balance is over. First adjustment, closing stock 1 lakh. Buy and TC, balance sheet asset side, trading credit side. Everybody, balance sheet asset side, stock. And trading credit side also. First right here, balance sheet asset side. Finish writing. Balance sheet asset side, stock in trade 1 lakh. And then come to the trading account credit side. Closing stock 1 lakh. Second, depreciate plant and machinery 20%, building 10%. Copied. Working note copied. Now depreciation. So less from asset. Everybody, balance sheet. Both depreciations deduct from asset. Done. And then profit and loss account debit side.
नेक्स्ट, इंश्योरेंस इज पेड इन एडवांस, करेक्ट। हमने उसका वर्किंग नोट भी बना के रखा है, उधर दो इफेक्ट भी लिख के रखा है। 1500 लेस फ्रॉम इंश्योरेंस एंड बैलेंस शीट एसेट साइड। So less from insurance and balance sheet asset side. Then 10,000 ka goods are withdrawn by Ganga for personal use. Drawings hai to capital debit, and cash is not withdrawn, goods are withdrawn, and goods ka account trading account. So second effect, trading account credit side. You can write the same thing here, or you can write here goods withdrawn for personal use. Then bad debts 10,000. Fifth adjustment, bad debts 10,000. ये bad debts कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग में क्या प्रॉफिट एंड लॉस में? बोलो बोलो, टाइप नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट मुंह तो खोलो, मैं देख लूंगा। बैड डेब्ट ट्रेडिंग डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट? या प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। I'll keep it in the inner column. 10,000 is bad debts, profit and loss debit, and what? Bad debts हुआ मतलब उतना डेटर पैसा नहीं देने वाला है, तो लेस फ्रॉम डेटर्स। एंड अब जो डेटर्स बचा है, इसमें भी डाउट लग रहा है कि कितना परसेंट नहीं देने वाला है। 5% लोग नहीं देने वाला है, तो डाउटफुल है 5%। 10 तो पक्का बेड डेब्स हो गया, और जो रिमेनिंग 70,000 है उसमें भी 5% इज डाउटफुल। Done. Now,
3,500 डाउट लग रहा है, शायद डेटर पैसा नहीं देगा, तो लेस फ्रॉम डेटर्स। एंड उतना बेड डेव्स बढ़ जाएगा अगर डेटर पैसा नहीं देगा तो ऐड 2 बेड डेव्स। That's it. Start totally. Trading count, credit side totally 738, 48, 848. I think 285, 500 confirm. Difference in the trading account. Yeah. What is this gross profit? Carry down to profit and loss account. To 85, 500 will come here. And okay, now profit and loss account. Credit side is obviously more.
$84,500. Don't dare switch off your camera again. Huh? Is 84,500 correct? Yes, it is correct. This is net profit. क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है हियर स्टार्टिंग में दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस काय लिहिले इक्वली सो हाफ हाफ bring the net profit here capital account
Wow. Over, right? So move on to question number 3. First, Anand and Milind are partners sharing profits or losses equally. Underline equally. From the following trial balance of their firm and the adjustments they are to prepare trading and prognosis account for the year ended 31st March 09 and a balance sheet as on that date. ट्रायल बैलेंस की डेट है 31 मार्च 09. ठीक है, बहुत सारे लोगों का फेस नहीं दिख रहा है. Okay, marking please. This time we have capital accounts also and current account also. So what account we will prepare? Capital account we will prepare or current account we will prepare? Yes, कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे? करंट अकाउंट, बराबर ना? एंड कैपिटल अकाउंट को फिर डायरेक्ट बैलेंस शीट में डाल देने का और करंट अकाउंट बनाने का. स्टार्ट. ओपनिंग स्टॉक, चलो बोलते जाओ कौन सी चीज कहाँ जाएगा. ओपनिंग स्टॉक कहाँ डालेंगे? जल्दी 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 जल्दी. ये सब में अभी यू शुड बी एक्सपर्ट. ओपनिंग स्टॉक किधर? ट्रेडिंग डेबिट. परचेजेस ट्रेडिंग डेबिट. सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स. तो जाके क्रेडिट साइड पे सेल्स पे एक मार्किंग भी कर देना. देन डेटर्स, बोलते जाओ जल्दी. यस, असेट. वेजेस, फैक्ट्री का खर्चा कि ऑफिस का रे? फैक्ट्री, सो ट्रेडिंग डेबिट. रॉयल्टीज कुछ नहीं बोला. रॉयल्टीज ऑन प्रोडक्शन और रॉयल्टीज ऑन सेल्स. अगर रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन फैक्ट्री का खर्चा होता है, तो ट्रेडिंग. अगर रॉयल्टी ऑन सेल्स बोला तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. बट कुछ नहीं बोला है रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी ऑन सेल्स, तो क्या करने का? आपको मालूम है 4 चीजें ऐसी है जो कुछ नहीं बोला डायरेक्ट एक्सपेंस होता है. कैरेज, फ्रेट, ट्रांसपोर्ट एंड रॉयल्टी. तो रॉयल्टी कुछ नहीं बोला डायरेक्ट एक्सपेंस है, और डायरेक्ट एक्सपेंस है, सो ट्रेडिंग डेबिट. ओके, सुना ध्यान से सब लोग. देन फर्नीचर एसेट, मशीनरी एसेट. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. बट आगे यहाँ इंफॉर्मेशन देखो क्या लिखा है. एडवर्टाइजमेंट इज फॉर 4 years. एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा है? इट इज फॉर 4 years. अच्छा एक बात बताओ, बकवास सवाल है. इस साल कितने साल थे? इस साल कितने साल थे? इस साल तो 1 ही साल था और हमने 4 साल का पे कर दिया है. तो फिर टेल मी कितने साल का एडवांस माना जाएगा? हाउ मेनी इयर्स का प्रीपेड माना जाएगा एडवांस? इयर्स, रुपीस. लुक, हमने 4 years के लिए 4000 पे किया है, तो 3 years का एडवांस है. 3 years का कितना? 4 years का 4000, तो 3 years का कितना रे? 3000. प्रीपेड है, वो इस साल का नहीं है, फ्यूचर का है, इसलिए अभी लेस कर दो. करेक्ट. And advance is your asset or liability? Tell me. If you pay in advance, it is your asset or liability? Asset. So balance sheet asset side.
प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 3000. पहली बात तो एडवर्टाइजमेंट में हिडन एडजस्टमेंट है, तो मार्क एडवर्टाइजमेंट. नाउ सैलरीज इज एन एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. टेल मी प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन का क्या? एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस. सोच समझ के बोलो, जल्दी बोलो लेकिन. एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस. सोच समझ के तो बोलो. पहली बात तो डेबिट पे दिख रहा है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट पे दिख रहा है. डेबिट पे होता है तो या तो एक्सपेंस होगा या तो एसेट होगा. एक्सपेंसेस शो डेबिट बैलेंस, एसेट शो डेबिट बैलेंस. तो डेबिट पे या तो एक्सपेंस होगा या तो एसेट होगा. कंट्रीब्यूशन लिखा है हमने वर्कर के प्रोविडेंट फंड में, हमने भी कंट्रीब्यूशन दिया है, तो ये हमारा एक्सपेंस हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. देन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट. पहली बात तो अगेन डेबिट पे है. डेबिट पे या तो एक्सपेंस होता है या तो एसेट. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस होता है या एसेट? एसेट बा. देन इंश्योरेंस एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. कैश एसेट. डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तो दो इफेक्ट या एक इफेक्ट? मिलन भाई, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ट्रायल बैलेंस में है तो ओनली वन इफेक्ट. विच इफेक्ट? व्हाट इफेक्ट? व्हाट विल बी द इफेक्ट? Profit and loss debit. Now the credit side, you have capital as well as current accounts. So you will prepare capital or current account. करंट अकाउंट. कैपिटल सीधा बैलेंस शीट में भेज देंगे और करंट अकाउंट जो है वो ओपनिंग बैलेंस दिखा देंगे करंट अकाउंट में. सेल्स, डायरेक्ट इनकम, ट्रेडिंग क्रेडिट, परचेज रिटर्न्स लेस फ्रॉम परचेजेस. और डेबिट पे जाके परचेज पे भी एक मार्किंग करना है. Then commission, where? क्रेडिट पे दिख रहा है तो इट इज एक्सपेंस और इनकम. क्रेडिट पे एक्सपेंस होता है या इनकम? इनकम. सो ये इनकम है. और ऑब्वियसली डायरेक्ट इनकम सिर्फ एक ही होता है, सेल्स. इनडायरेक्ट इनकम होगा ये कमीशन. इनडायरेक्ट इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट साइड. प्रोविडेंट फंड, नाउ ये क्रेडिट में है. नाउ क्रेडिट पे होता है या तो लायबिलिटी होता है या इनकम होता है. लायबिलिटीज एंड इनकम शो क्रेडिट बैलेंस. ना प्रोविडेंट फंड वर्कर का पैसा है, वर्कर रिटायर होगा तो हमको उसको देने का है. देने का है तो लायबिलिटी है, BL. What about income from provident fund investment? ये इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है तो ये इनकम है कि लायबिलिटी है? क्रेडिट पे या तो इनकम होगा या लायबिलिटी. एसेट कैसे हुआ यार? क्रेडिट पे है या तो इनकम या तो लायबिलिटी. इनकम या लायबिलिटी? वेट, ये प्रोविडेंट फंड का पैसा अपना पैसा है कि वर्कर का पैसा है? वर्कर का है. तो उसको इन्वेस्ट करके जो इनकम आएगा वो हम रख लें कि वो भी हमको वर्कर रिटायर होगा तब उसको देना पड़ेगा? देना पड़ेगा ना. सो दैट ऑल्सो इज योर लायबिलिटी.
I agree that it is income from investment, but this income is from such an investment that money only does not belong to us. It belongs to worker. So the income also has to be given to the worker only. Then reserve for doubtful debts. A trial balance wala RDD is old RDD or new RDD? Old RDD. And old RDD क्या करते हैं? Less from bad debts. डेबिट पे बेड डेब्ट नहीं है, नहीं तो मैं उसको मार्किंग करता था. And finally creditors, BL, liability. Now go for the adjustments. Adjustment 1. Cost of closing stock is 30,000 and market price is 25,000. We have to take whichever is more or whichever is less. Less. So 25,000 is less. Underline 25,000. And closing stock to effects. Stock is your asset, balance sheet asset side, and वो goods का stock है. Goods का account, trading account, trading credit. Then adjustment 2 में पहले लिखा है goods of 3,000 were sold on 30 March 2009. हमारा year ending is 31st March. उससे पहले 30 मार्च को ही goods बेच दिए. But no entry thereof made in the sales book. अभी तक सेल्स का एंट्री नहीं किया है, तो कर दो सेल्स का एंट्री. और अगर अभी हम सेल्स का एंट्री कर देंगे तो सेल्स का अमाउंट बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा. ये सेल हमने रिकॉर्ड नहीं किया है. दिस इज अनरिकॉर्डेड सेल्स. If we record it now, the sales amount will increase or decrease? Increase. To add to sales. And secondly, if you have sold, you have to receive money from your debtors. So debtors also increase. So add to sales, add to debtors. ये उस 3,000 का है. और उसी में एक और सेंटेंस भी है पॉइंट 2 में. Goods of 1,000 were withdrawn by Anand for personal use. If it is withdrawn by Anand for personal use, so it is drawings. And drawings है तो profit and loss, sorry, करंट अकाउंट में ड्रॉइंग्स किस तरफ जाता है? डेबिट साइड. तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट. एंड ये गुड्स विड्रॉन है, एंड गुड्स का अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट. तो गुड्स बिजनेस में से जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट. सो ट्रेडिंग क्रेडिट. मार्किंग्स डन. तो जाइए ऊपर सेल्स और डेटर्स पे एक एक मार्किंग करना है. एड टू सेल्स, एड टू डेटर्स है ना. तो क्रेडिट साइड पे सेल्स पे एक और मार्किंग हो गया, एंड डेबिट पे डेटर्स पे मार्किंग. थर्ड, डेप्रिशिएट फर्नीचर. Furniture value increases or decreases, depreciation decreases. So less from furniture. And secondly, depreciation is an expense, profit and loss debit. Mark furniture.
write off 600 as bad debts. Bad debts के दो इफेक्ट, bad debts हो गया ना, तो add to bad debts and less from debtors. आगे लिखा है मेंटेन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% ऑन डेटर्स. अगेन वी आर डाउटफुल कि 5% डेटर्स पे और बेड डेब्ट्स होने वाला है, तो अगेन बेड डेब्ट बढ़ने वाला है और उतना डेटर कम देने वाला है, तो अगेन ऐड टू बेड डेब्ट्स एंड लेस फ्रॉम डेटर्स. Then provide reserve for discount on debtors. Provide reserve for discount on debtors. Now tell me, debtors से discount मिलने वाला है कि we will have to give discount to debtors? When debtors will pay us, we will give them discount. Yes. When debtors will pay money to us, we will give them discount. तो हमारा discount expense बढ़ने वाला है. Add to discount allowed. And when we give discount to debtors, उतना debtors हमको कम पैसा देगा. So less from debtors. I repeat, when debtors will pay me money, I will give them discount. If I am going to give them discount 3%, मेरा discount expense बढ़ेगा. And if I give them discount, उतना पैसा वो लोग मेरे को कम देगा. तो add to discount allowed, less from debtors. तो debtors पे एक ओके वो बाद में मार्किंग करते हैं. चलो. एंड सेम वे क्रेडिटर्स का 2% डिस्काउंट प्रोविजन करना है. प्रोवाइड फॉर. नाउ ये 2% का क्या? Now when we pay our creditors, we are going to get a discount. Correct? So our discount received income is going to increase. When we pay our creditors, we are going to get discount. So get discount is our income. And if we get discount, that much less we will pay our creditors. Now, done all the markings. Now, दो बार हमने लिखा add to bad debts less from debtors. तो दो बार पहले तो डेटर्स और बेड डेब्ट्स को मार्क कर दो. डेटर्स बेड डेब्ट्स है नहीं. फिर एक बार हमने लिखा एड टू डिस्काउंट अलाउड लेस फ्रॉम डेटर्स, तो उसके लिए अगेन डेटर्स पे मार्किंग. डिस्काउंट अलाउड नहीं है. और इस तरफ हमने लिखा एड टू डिस्काउंट रिसीव्ड एंड क्रेडिट लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स, सो मार्क क्रेडिटर्स एंड डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं है. सो टोटल डेटर्स में अभी तक 4 मार्किंग आ गया. Then prepaid insurance 200 and salary 1500 is paid in advance. प्रीपेड का मतलब भी एडवांस ही होता है. प्रीपेड इंश्योरेंस यानी एडवांस इंश्योरेंस, और सैलरी भी एडवांस है. नाउ टेल मी, अगर हमने एडवांस पे किया है तो वो इस साल का एक्सपेंस है कि नेक्स्ट ईयर का अभी से पे किया है? नेक्स्ट ईयर का अभी से पे किया, तो वो इस साल का नहीं है. लेस फ्रॉम एक्सपेंस. And we have paid in advance, so it is our asset or liability? Asset.
कौन से दो एक्सपेंस है भाई? इंश्योरेंस और सैलरी। तो लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड असेट, इंश्योरेंस एंड सैलरी, मार्क इंश्योरेंस एंड मार्क सैलरीज। Next, provide interest on capital 18% per annum and interest on drawings 12% per annum. पहली बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। ओनर्स ने बिजनेस में जो कैपिटल लगाया उस पे हम उनको इंटरेस्ट पे करेंगे। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? ओनर्स ने जो कैपिटल बिजनेस में डाला है उस पे हम उनको इंटरेस्ट पे करेंगे। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? Owners have put money in the business capital. On that, business will pay them interest. So for the business, it is an expense, and we have to pay them. हमको उनको पैसा देने का है, तो they become creditors. And when a person becomes creditor, उसको क्या करते हैं? Credit. तो partners current account credit. एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का दो इफेक्ट बता तो दूं, बट मेरे को ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स देखा ही नहीं। जब है ही नहीं ड्राइंग्स, तो मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कैसे करूं? भले पार्टनरशिप की एग्रीमेंट में लिखा है कि ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, अब एग्रीमेंट में लिखा है, उन्होंने मुझे एडजस्टमेंट में बताया, बट इस साल कोई पार्टनर ने कोई ड्राइंग्स किया ही नहीं है, तो उसको इंटरेस्ट कैसे चार्ज करेंगे? हाउएवर, यहां पर है, कहां गया? नहीं, यहां नहीं, यहां ड्राइंग्स है ना, गुड्स आर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, है कि नहीं ड्राइंग्स? तो उधर तो करना पड़ेगा। पार्टनर घर पे लेके गया बिजनेस का चीज, तो बिजनेस उसको उस पर इंटरेस्ट पे करेगा कि बिजनेस उसको इंटरेस्ट चार्ज करेगा? चार्ज करेगा। तो बिजनेस के लिए ये इंटरेस्ट इनकम है। पार्टनर से इंटरेस्ट लेने का है ना, वो बिजनेस का एसेट घर पे लेके गया, तो हम उसके पास से उस पे इंटरेस्ट लेंगे। बिजनेस के लिए वो इनकम है, क्रेडिट, इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, क्रेडिट। एंड उससे लेने का है तो ही बिकम्स डेटर, तो उसका करंट अकाउंट डेबिट। क्लियर? Then Anand is allowed 2% commission on gross profit. Anand partner है, and business will pay him commission of 2% on gross profit. So for the business, it is an expense, profit and loss debit, and business उसको देने का है, बिजनेस में से उसको कमीशन देने का ही बिकम्स क्रेडिटर, तो उसको क्रेडिट, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट।
We are preparing current account, remember, not capital account. So heading accordingly. You know, debit side of trading account, first entry is always opening stock. Second is always purchases. Credit side, you always have first line sales. And just before the total, we have closing stock. Everybody, lines drawn. Should we proceed? Lines drawn. So start with the posting now. You already have the markings. खाली याद रखना डेटास में 4 लाइन छोड़ना है. अरे सॉरी 6 लाइन छोड़ना है. Okay. Then Provident Fund investment 2000. Provident Fund investment 2000. Okay. Asset side 2000. Insurance profit and loss debit 500. Cash 3000. Asset. And depreciation on machine 6000. Here everyone. 6000. मैंने इनर कॉलम में क्यों लिखा? वो फर्नीचर का भी डेप्रिसिएशन आने वाला है ना, तो वो ऐड करके लिखूंगा. ऑल्टरनेटिवली अलग लिखना है तो अलग लिखने का, शर्माने का नहीं. ऐसा ही बिंदास अलग लिखेंगे, फिर फर्नीचर का भी डेप्रिसिएशन अलग लिखेंगे. दैट इज ऑल्सो फाइन. ठीक है. सो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड इज थ्रू. जल्दी चेक कर लो एक बार. ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट चेक कर लो वेदर यू हैव रिटन एवरीथिंग और नॉट. इफ नॉट, स्टार्ट राइटिंग. जल्दी. टिक टिक 1. लुक, दिस क्वेश्चन कवर्स एवरीथिंग. वो प्रोविडेंट फंड का चक्कर आ गया, वो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्रेडिटर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सब आ गया. इसमें काफी कुछ कवर हो जाता है. Then check balance sheet.
इतना सब चीज लिख लिया है कि नहीं, प्लीज चेक। इंश्योरेंस में एडजस्टमेंट है, यस 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 यस। तो इंश्योरेंस इनर कॉलम में रखना चाहिए था एवरीवन। Changes please, and then check the balance sheet. So trial balance debit side posting is done. Next time we will directly start with the credit side and then the adjustments. Chalo, bye bye. See you. Take care.